अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल-फातिहा को और उसका एक शॉर्ट क्विज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरत फातिहा कुरान की पहली सूरा है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं जो बहुत मेहरबान है और रोज़े जज़ा का मालिक है। और ए मेरे अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और ए अल्लाह, हमें हदायत अता फरमा और हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिनको तूने हदायत अता फरमाई, और उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पे तूने अजाब नाजिल किया। तो ये थी सूरत फातिहा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे सूरत अल-बकरा का पहला रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। Now it's time for quiz. What is the most common name of Surah Al-Fatihah? So the correct answer is option B, Umm-ul-Qur'an. Second, how many ayah are there in Surah Al-Fatihah? So the correct answer is option C, 7. Which ayah starts Surah Al-Fatihah? So the answer is option B, Bismillahir Rahmanir Rahim. Question 4. What does Ar-Rahman mainly indicate? So the correct answer is option C, Allah's mercy for all creation. Question 5. Which ayah clearly shows Tawheed? So the correct answer is option C, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Question 6. Maliki Yawmiddin refers to Allah as the owner of which day? Correct answer is option B, Day of Judgment. Question 7. Surah Al-Fatihah is also called As-Sabul Mathani. What does it mean? So the correct answer is option A, the repeated 7 verses. Question 8. In which rakah is Surah Al-Fatihah compulsory? So the correct answer is option C, every rakah. Question 9. Whom does Ghairil Maghdoobi Alaihim refer to? So the correct answer is option B, those who had knowledge but rejected it. Question 10. What is the core dua for Surah Al-Fatihah? आंसर कमेंट में देना, मैं करेक्ट आंसर पिन कर दूंगा। वीडियो कैसा लगा और कितने आंसर करेक्ट हुआ कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मेन चला दूसरा वीडियो बनाने। जाज़ाकल्लाह खैर।